દિલ્હી ભારતના મંડપમ ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સહકારી ક્ષેત્રે વિશ્વની સૌથી મોટી અન્ન ભંડારણ યોજનાના પાયલટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત દેશના 11 રાજ્યોની 11 ઇપેક્સ ગોડાઉનનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। આ સાથે દેશભરમાં 18,000 ઇપેક્સ સંપૂર્ણતઃ કોમ્પ્યુટરાઇઝ બની ચૂક્યા છે। તે સહકારી ક્ષેત્રે મોડેલાઇઝ બનવા સાથે તેની પારદર્શિતામાં વધારો થયો છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે ભારત મંડપમ વિકસિત ભારતની અમૃત યાત્રામાં વધુ એક ઉપલબ્ધિનો સાક્ષી બન્યું છે। सहकारथी समृद्धिनो देश लीधेला संकल्पने साकार करवानी दिशामां आजे पण आगळ वधी रह्या छे। खेती अने खेडूतोना पायाने मजबूत करवामां सहकारी शक्ति खूब मोटी भूमिका छे। आ विचार साथे एक अलग सहकार मंत्रालयनुं गठन कर्युं छे अने हवे आ विचार साथे आज आ कार्यक्रम थई रह्यो छे। આજે અમે આપણા ખેડૂતો માટે દુનિયાની સૌથી મોટી સ્કીમ અથવા ભંડારણ સ્કીમ શરૂ કરી છે। આના માધ્યમથી દેશને ખૂણે ખૂણેથી હજારો વેર હાઉસીસ બનાવવામાં આવશે, હજારો ગોડાઉન બનાવશે। આજે 18,000 પેક્સ કોમ્પ્યુટરાઇઝનું મોટું કામ પૂરું થઈ ચૂક્યું છે। આ બધા કામ દેશમાં કૃષિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નવો વિસ્તાર આપશે અને કૃષિને આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે જોડશે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મહત્વપૂર્ણ દૂરગામી પરિણામ લાવવા માટેના કાર્યક્રમને લઈ ઉપસ્થિત તમામ અભિનંદન પાઠવતા વિકસિત ભારત સંકલ્પ સિદ્ધિ માટે આત્મનિર્ભર બનવા પર ભાર મૂક્યો હતો। તેમણે આત્મનિર્ભર ભારત માટે સહકાર ક્ષેત્રની મહત્વની ભૂમિકા અંગે જણાવતા કોઓપરેટિવ સોસાયટી આયાત પ્રોડક્ટનું લિસ્ટ તૈયાર કરી બહારની આયાત ઘટાડવા અંગે કેટલાક સૂચનો પણ આપ્યા હતા। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। आपके सामर्थ्य, आपकी संगठन क्षमता को देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे सुझाव आते रहते हैं। सारे तो अभी एक साथ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ मैं इशारा करना चाहता हूं। जैसे मेरा सुझाव है कि हमारी कोऑपरेटिव एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आज हम बाहर से लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। सहकारी क्षेत्र इसमें क्या कर सकता है, उनके लिए देश में ही एक सपोर्ट सिस्टम हमें बनाना है। ये जिम्मेदारी सहकारी संस्थाएं बहुत आसानी से ले सकती है। अब जैसे हम कृषि प्रधान तो देश कहलाए जाते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो कृषि प्रधान देश के रूप में हम पिछले 75 साल से गीत गाते रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, हजारों करोड़ रुपए का खाने का तेल हर वर्ष इंपोर्ट करते हैं। खाने के तेल में हम आत्मनिर्भर कैसे हो? इसी मिट्टी में पैदा हुआ तिलहन, उससे निकला हुआ तेल हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक ताकत दे सकता है। और इसके लिए अगर मेरे सहकार क्षेत्र के साथी काम न करे तो कौन करेगा? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप ही करेंगे ना, करना चाहिए ना। हमें अब आप देखिए, खाने का तेल भी बाहर से आता है और ऊर्जा के लिए जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल से जुड़ा अपना इंपोर्ट बिल भी, इसको भी हमें कम करना है। इसके लिए हम इथेनॉल को लेकर आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में इथेनॉल के प्रोडक्शन, खरीद और ब्लेंडिंग तीनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज ये काम ज्यादातर चीनी मिलों के जिम्मे है और सरकारी कंपनियां उनसे इथेनॉल खरीदती है। क्या इसमें सहकारी समितियां नहीं आ सकती है क्या? जितनी ज्यादा आएगी उतना ही इसका स्केल और बढ़ जाएगा।
दालों के इंपोर्ट को कम करने का। अब देखिए, कृषि प्रधान देश, धार बाल से ला करके खाते हैं। दालों के इंपोर्ट को कम करने के मामले में भी मेरे सहकारिता क्षेत्र के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े भी अनेक छोटे छोटे सामान हैं जो हम सभी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव्स की मदद से हम उन्हें देश में ही बना सकते हैं। 19 જૂન 2022 કેબિનેટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ડિજિટલ ઇન્ડિયા વિઝન સાથે કેબિનેટમાં સહકારી ક્ષેત્ર ઈ-પેક્સની દરખાસ્ત કરી હતી, જે બાદ 1.5 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં 65,000 પેક્સમાંથી 18,000 ઈ-પેક્સ આજથી કાર્યરત થયા છે। બાકીના 30,000 પેક્સ ચૂંટણી પહેલા લોકોની સેવા માટે કાર્યરત કરાશે, તેવો દૃઢ વિશ્વાસ કેન્દ્રીય સહકારી મંત્રી અમિત શાહે વ્યક્ત કર્યો હતો। કેન્દ્રીય સહકારી મંત્રી અમિત શાહે ઈ-પેક્સથી પારદર્શિકતા લાવવા માટે તે મોડલાઇઝ અને વેપારના ઘણા નવા અવસરો પણ જનરેટ કરશે તેમ જણાવતા ઈ-પેક્સ દ્વારા સહકારી ક્ષેત્રમાં મળવા જઈ રહેલા ફાયદા અંગે અવગત કર્યા હતા। हमने पैक्स के नए बायलॉज बनाए हैं और मुझे आनंद है कि पूरे देश की सरकारों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये बायलॉज को स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद एक्सेप्ट भी किया है, लागू भी कर दिया है और पैक्स तक पहुंचा भी दिया। और वो बायलॉज लागू होते ही पैक्स 20 प्रकार के नए काम कर पाएगी। अब पैक्स डेयरी का भी काम कर पाएगी, पैक्स नीली क्रांति में भी जुड़ पाएंगे, पैक्स जल जीवन मिशन के पानी प्रबंधन का काम भी करेंगे, पैक्स अब भंडारण की क्षमता को भी बढ़ाने में योगदान दे पाएंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे, पैक्स सस्ती दवाइयों की सस्ती दवाइयों की दुकान भी खोल पाएंगे, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे और पैक्स उज्ज्वला योजना के डीलर भी बन पाएंगे। ढेर सारे कामों को आज पैक्स के माध्यम से सुचारू रूप से लागू करने का रास्ता जो खुला था बायलॉज से, आज कंप्यूटराइज होने से सारी चीजों के अकाउंट को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर समाहित कर लिया गया है। और देश की हर भाषा में, किसान की भाषा में, गांव की भाषा में, हर भाषा में ये सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में किसानों के साथ बात करता है और रोजिंदा कामकाज भी करेगा। लगभग 2500 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम मोदी जी ने हमारी प्राइमरी इकाई, जो प्राथमिक इकाई है पैक्स को मजबूत करने के लिए लगाई है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद और हर्ष है। मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। કેન્દ્રીય સહકારી મંત્રી અમિત શાહે સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે દેશના આઝાદ થયો ત્યારથી દેશભરમાં સહકારી ક્ષેત્રના કાર્યકર્તા દેશની અનેક પાર્ટીઓ પાસે માંગ કરતા હતા કે સહકારી માટે એક અલગ મંત્રાલયની સ્થાપના કરાય। સહકારી ક્ષેત્રે પણ સમયની સાથે બદલાવ ખૂબ જરૂરી છે, તેને મોડલાઇઝ કરવા સાથે તેમાં પારદર્શિકતા પણ લાવવી જરૂરી હતી, પરંતુ વર્ષો સુધી તેની નોંધ પણ લેવાઈ ન હતી, એમની માંગો પર ધ્યાન પણ આપ્યું ન હતું। પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બન્યા ત્યારે 70 વર્ષોની માંગ પૂરી એક સ્કૂલ ફેસ સહકારી મંત્રાલયની સ્થાપના કરી તેમ જણાવ્યું હતું।